Hi guys, welcome back. In the second video, we're gonna discuss other trigonometric ratios, how to find out the trigonometric ratios like sine theta, cos theta, tan theta, cosec theta, and secant theta. As we know that sine theta equals side opposite to angle divided by hypotenuse, and cosine is side adjacent to angle A. We will discuss this. First of all, we will know a little bit about this Pythagoras theorem. What Pythagoras theorem stands for. We know square of the longest side is equal to sum of the sum of squares of other two sides. That is hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square. the हम ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने हो किसी भी ट्रायंगल में। अगर उसमें दो साइड दिए हो तो तीसरा निकाल सकते हैं, फिर हम बाकी रेशोज भी निकालेंगे। लाइक यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ साइन इज इक्वल टू 3/4, फाइंड अदर रेशोज। हम जानते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर इन दिस फिगर इज, if we are taking a our angle, then perpendicular is BC and hypotenuse is AC. As it is, जो ये 3/5 है ये लोवेस्ट फॉर्म में गया, फैक्टर इसका कैंसल आउट किया हुआ है। सो हम ले सकते हैं कि BC इज इक्वल टू 3K एंड AC इज इक्वल टू 5K। इसके बाद हम थर्ड साइड डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर is equal to base square and altitude square. So AC is equal to AB square plus BC square. That is 5K square is equal to AB square plus 3K square. यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। एक वेरिएबल है यहाँ पे हमें AB स्क्वायर, 5K square is 25K square and 3K square is equal to 9K square. Sorry, it's not here cube, it's square here. So AB square is equal to 25K square minus 9K square. 25 minus 9 is 16K square. AB square is equal to 4K square. Cancelling squares on both sides. AB equals to 4K square. So we can find out other trigonometric ratios as cos A. Cos A is equal to base divided by hypotenuse. Base is equal to 4K. Base is equal to 4K. Perpendicular hypotenuse is 5K. K and K will cancel out, that is 4/5. Similarly, tan equals to perpendicular by base, perpendicular is 3K divided by 4K. K and K will cancel out, that is K will cancel, that is 3/4. और एक एग्जांपल करते हैं हम। हमें राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, जो राइट ट्रायंगल्ड है एट बी, इसमें ए बी क्यों है 24 और सी क्यों है BC क्यों है 7 सेंटीमीटर। हमें इसमें बाकी रेशोज निकालने हैं। हमें साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, मीन्स हमें इस वाले एंगल से पहले कुछ निकालना है जो यहाँ पे साइन ए है, उस वाले एंगल से, फिर और कुछ यहाँ से हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी। First of all, we will use Pythagoras theorem here. As we know, AC square equals to BC square plus AB square. Pythagoras theorem से BC equals to 7 square plus AB equals to 24 square. 7 square 49 plus 24 square equals to 576, which equals to 625. AC square equals to 625, or AC can be
determines that AC is equal to under root of 6 to 5. Under root of 6 to 5, 25 into 25 equals to 6 to 5. So we can say that AC is equal to 25. AC is equal to 25. AC equals to 25. So sin A is equal to, means this is the angle. Sin A perpendicular by hypotenuse. Opposite side to the sin A is BC, that is 7, divided by hypotenuse, that is 25. Cos A is equal to base divided by hypotenuse. Base divided by hypotenuse. Base is with respect to angle A is 24, and hypotenuse is the same, that's the AC, which is equal to 25. Now the changes in angle. Angle A changes to angle C. Sin C. Sin C. Angle is this one now. Sin C perpendicular divided by hypotenuse, it changes perpendicular. Opposite side is this, that is 24 divided by 25. And cos C is equal to base divided by hypotenuse. Base divided by hypotenuse equals to base is 7 divided by hypotenuse, that is 24. Again